everyone, मेरा नाम है Anshita Singh and you are watching Stories from Heart of India. And today's story is about Mr. Piyush Agrawal from Happy Cultures. Hi, Mr. Agrawal, welcome to the show. Am I Thank audible? you. Is the voice clear? Thank you, Ashita. Yeah, you are audible. Okay, superb. So, also, what's going on? Like, what's happening in the background and how have you been? And could you tell us a little bit about what's happening exactly? So basically, Happy Culture is all about a community that I have visioned and have built. I have been working with farmers from the local areas and have trained them for handcrafts, and we are creating the products now. So right now, Okay. I'm at the place. We work on a virtual factory model. There's no factory to this. This is a Chopal model. Okay, Okay. and right now you are at a place where there is a village and people are working and learning the products. They are trying Oh, to that's develop a nice. new products, and meanwhile we are having an interview. So that's something which is happening at the backstage. This is the community. Just a sec. Superb. So basically, this is the community, and this is how we work. This is how the products get developed. I'll Right. show you So something which we also, are Mr. making. Agarwal, tell us a little bit about the brand, what exactly is your USP and how do you differentiate from the rest of your competitors? A little bit from the start. What exactly is it? Okay. Basically, Happy Culture is more about the community-driven product making brand. I mean, like this is a handmade brand which create products within a community and sells the product. Right. All the things which we make are completely handmade and have the values of like either they are like basic arts matured with an new technologies or something like we use some machines, we use hand nets, we use crochetings, and we create different yarns from the different factories, and we procure that. I mean, like we procure different yarns and we establish products out of that, and we Okay. try and keep the product simple and useful for the general public, and we make sure that everything which we use, we create, can be used on a daily basis or is trendy enough. Like this is Right. something which we're developing now for the next session, not yet a complete product. This is a cap Okay. we need basically, and this is a muffler for this. This is a spare, Okay. and this is created for girls basically. Right. So the design is midi green, and the wool which we are using is ultra soft. I mean, like you will have a different kind of a touch and feel for the product. All right. Superb. So also when we talk about the journey, we can see the process and it looks pretty exciting and I'm sure there's a lot of hard work that goes behind it. But when we talk about the journey so far, how has that been, from the beginning I and think uh, this is now 7 or 8 years of functioning. I mean, like 2017 we started. This is 2024, and 7 days from now, it will be, I think, what, 7 and 4, 7 years since we are actually functioning. I mean, like in operations. So overall, we have developed a lot. We have built a personal, interpersonal relationship with each other. I being from a urban background and they being rural, and I have been completely from an urban background. I had no touch with the village. I used to be a engineer working for Honda Cars India. Then I came back home, started doing this, and created a community. And we all being together for this long and creating products is like amazing. I mean, like I have learned a lot. There's a lot of human learning curve which is there, right from somebody who is very basic, a woman, to somebody who is in themselves an entrepreneur. I mean, like they themselves, each person who is working in a community is an entrepreneur in itself, right. in herself or in himself.
himself. I think everybody is doing a great task. Everybody knows now a product or two. They know how to develop that, how to sell it in the market, and they're working in the community as well. So, Right. what do you say? There's a lot of scope and strength when in numbers. So, Correct. right now we are like that ways. We have almost 500 families working. We have all the people who are creating products and everything. So, we are enjoying, and then being a visionary in this, I also enjoy a lot and learn a lot. That's क्योंकि amazing. मतलब if I say in Hindi in like actual this thing for their understanding, इनिशियल ईयर्स में इन लोग का लैंग्वेज और हम लोग का लैंग्वेज बहुत अलग था, मतलब कम्युनिकेशन के गैप्स थे। फिर बिल्कुल। मेरे पर्सनल एनवायरनमेंट्स के बहुत फर्क था। आज की Correct. तारीख में दे ऑल आर लाइक at the same level. They use YouTube, they use Instagram, they Oh, see wow. products, they create products, they Correct. learn from each other. So all the things are there, and everybody is doing a great job. I personally believe that they are doing a great job because they were the general village housewives. Correct. And I'm sure this would have brought a lot of employment also, So the Coming area to got that, developed. hmm, Please, please. coming to that, I wanted to know, we've spoken about the past, we know how the journey started, and the journey has been great so far. But when we look into the future, let's say 5 years down the line, आपको क्या लगता है हैप्पी कल्चर्स का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? Ma'am, we started with almost like 10, 12 people as a community, and we are growing every day, and every day new people join, new people come and learn. We have created many designs and for many big brands as well. So I think overall experience, my past corporate experience and today's very crude real world experience, all in a mix, is a very great learning for me for sure, and for them as well, because they are getting interacted at a very different level because of my experiences. I'm bringing you these people is something which is an experience as well. I mean, like if Pluto's one is giving us a call for an interview and giving us a limelight for even an instance, this is something which I think is already an answer for what we have done till date. Right. Absolutely. तो ऑल्सो व्हाट इज योर विजन फॉर हैप्पी कल्चर्स? मतलब आप आगे चल के आप इसको किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि हाउ एज अ कम्युनिटी यू ऑल आर प्लानिंग टू ग्रो टुगेदर? आई थिंक एज एन कम्युनिटी हम लोग जो आपस में एक इंटरपर्सनल बॉन्ड आज की तारीख में क्रिएट कर चुके हैं, या कम्युनिकेशन कंफर्ट है, या एक दूसरे की एक ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट है, वो अलग करने वाली नहीं है। मतलब आप के पास दो रास्ते होते हैं इस तरीके की चीज़ें बनाने में, या तो आप किसी को भी हायर कर लीजिए, उनको काम करवाते जाइए और मार्केट में सेल कर लीजिए, या आप कहीं से पेड कर लीजिए। एक होता है कि आप खुद ही कर रहे हो और आप एक दूसरे के हाथ पकड़ के कम्युनिटी बना के कर रहे हो। तो ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे के सारे आपस में चेन की तरफ फॉर्म हो रहे हैं और ये बड़ी होती जा रही है। तो कम्युनिटी अपने आप में शेप ले चुकी है और वो अपने आप ही लोग ऐड हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को करेक्ट। बेनिफिट दिख रहा है, जैसे जैसे उनको लर्निंग्स दिख रही हैं, अपने बच्चों को एनरोल करना, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी, राइट, इन अ वे। तो डाउन दी ईयर्स, मतलब जो मैं अगर हैप्पी कल्चर का विजन देखता हूँ, तो मेरा विजन जब मैंने शुरू किया था तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मुझे एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो लोगों की मदद कर सके, और एक इस्टेब्लिशमेंट हो, एक अपने में इंडस्ट्री हो, एक फुल फ्लेश फंक्शनल प्रोजेक्ट हो। तो अब हम करेक्ट। लोग उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 300 से ऊपर एसकेयूज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, वॉल्यूम्स में कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए कर रहे हैं, ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं, डिटेल हैं। तो वो अपने में ही बहुत चैनलाइज्ड प्रोसेस ले चुका है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल बहुत ट्रेडिशनल हो गया। तो उसको
अनकन्वेंशनल लेवल पे चला गया है, क्योंकि भाई पहले चौपाल में काम होता था, फिर वो फैक्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज के बाद वो सुपर फैक्ट्रीज हो गई, और हम लोग वापस चौपाल में चले गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि आप रिवर्स साइकिल पे चले गए, और आपने उस साइकिल को पकड़ के फ्यूचर के हिसाब से प्रोडक्ट, मतलब आपने बहुत पास्ट के एवोल्यूशन को पकड़ा और उसको एक फ्यूचर के उसके साथ मिक्स कर दिया है। तो करेक्ट, बीच में जो फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट होना या अलग अलग एक्सपेंसेस आना, वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया है यहाँ पे। और एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, लोगों की अपनी कंफर्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं है राइट, कि हर कोई किसी वक्त भी काम कर रहा है, जिसका जब मन है वो काम कर रहा है। ओके, सुपर। तो ये तो एक और जी, ओवरऑल पिक्चर में ये है कि मतलब सबके सब उसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन में भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ डिसिप्लिन, लर्निंग एज वेल एज अर्निंग। तो मतलब वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है लर्न अर्न ग्रो, करेक्ट, उसको इम्बाइब कर रहा है कि आप सीख रहे हो, कमा भी रहे हो, ग्रोथ भी हो रही है। तो दिस इज व्हाट हैप्पी कल्चर एज एन कम्युनिटी डज। ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। आई थिंक जो आप काम कर रहे हैं इज एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल एंड आई वुड थैंक लाइक यू। टू विश यू ऑल द लक फॉर फ्यूचर एज वेल। ऑल्सो यू नो, जब बात करें हम ऐसे स्टार्टअप्स की या ऐसे कुछ इनोवेटिव काम की जो लोग शुरू करते हैं एंड देन इट टर्न्स इनटू समथिंग ग्रेट, हाउ डू यू थिंक अ कैंपेन लाइक हार्ट ऑफ इंडिया या वोकल फॉर लोकल जो कि हम अभी चला रहे हैं अपने प्लूटोस वन पे, वैसे कैंपेन्स आपको क्या लगता है ऐसे बिज़नेसेस को किस तरह से हेल्प करेंगे? एंड कैंपेन्स लाइक दैट इनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसे ब्रांड्स का कितना कितना विजिबिलिटी बढ़ सकती है या क्या स्कोप हो सकता है फॉर द फ्यूचर? बेसिकली इस तरीके के प्रोग्राम, जैसे आप वोकल फॉर लोकल की बात कह रही हैं या हार्ट ऑफ इंडिया की बात कह रही हैं, ये बहुत नीश मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, ये जितनी भी ब्रांड्स इस तरीके की हैं, हैप्पी कल्चर्स की तरीके की ब्रांड्स, या वो कम्युनिटी ड्रिवन है या वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे भी वो एक नीश प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं। तो इन ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके जो लवर्स हैं या जो इसके यूजर्स हैं ना, वो बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि भाई कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो इन प्रोडक्ट्स की नहीं होती है। बीइंग ऑनेस्ट, इसमें बहुत हार्ड लेबर लगता है, क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, हर किसी को इसकी नॉलेज या उसका टेस्ट नहीं होता है। ऑथेंटिसिटी का लोगों को बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये बातें हो रही हैं क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स बना लिए हैं। तो ऑथेंटिफिकेशन के भी बहुत इश्यूज हो गए हैं, फिर मशीन इन्वॉल्वमेंट्स बहुत हो गई हैं। तो जैसे एक्चुअल में बात करें तो आपको याद होगा कि पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, आई आई थिंक 90s, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे घर के दादी लोग बहुत स्वेटर्स वगैरह बनाती थी, और वो अपने में बहुत एक्सक्लूसिव माना जाता था, मतलब लाइक पीपल वर करेक्ट, क्रेजी अबाउट। या, या, फिर वो टाइम आया जब मशीन्स ने उसको रिप्लेस कर दिया, और मशीन्स में बल्क में बनने लग गया, क्योंकि मशीन्स वाले सस्ते पड़ रहे थे, उसमें हार्ड लेबर नहीं थी। एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग दैट। एक्चुअल वूल्स लोग कम यूज करना शुरू किए। ये तो कोविड 19 ने ऐसा इम्पैक्ट दिया कि वापस आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एक एक दो दो लोगों की टीम के साथ या घर की दादी लोगों को प्रमोट कर करके लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना डाली। और आई रिमेम्बर 2017 में जब मैंने ये शुरू किया था, तो मैंने क्रोशे पहली बार देखा था। ओह! ओके, मैंने निटिंग देखी थी, लेकिन क्रोशे को मुझे आइडिया नहीं था कि क्रोशे कोई चीज होती है। ओके, उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठ के इंडक्शन कर करके, मतलब क्योंकि मैं, इफ यू आस्क अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, आई यूज्ड टू बी ऑटोमोबाइल डिजाइनर, आई यूज्ड टू बी वर्किंग विद होंडा कार्स इंडिया, सो आई हैड very little knowledge about all this. राइट, All I wanted was a lot of handicrafts to buy for myself. I mean, like, I used to go to Suraj Kund, I used to go to different melas and everything, and I used to buy. But then I came across this vision. Where I came back, I came across this vision of creating something for the community, for myself, so as to uh, do things in a very different fashion. I created this out of my vision. I created a community. Now we are at a stage where we have a lot of people working as in a community, and we can create a lot of multiple products throughout. Like, we can create, if you say achar banana hai, we can try and do that.
हमें स्टिचिंग करनी है, हाँ ठीक है, वी कैन डू दैट। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट्स जो हम लोग मेन लाइन बना रहे हैं वो तो हमारा एक प्रोडक्ट मार्केट में हो ही गया। इसके अलावा क्योंकि कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग हैं और बहुत काम चाहिए और बहुत सारा कुछ है, तो हमारा फंडा ये है कि भाई सब तरीके के काम हमें करने में कोई इशू नहीं है जो कि हाथ से रिलेटेड है। मतलब एनीथिंग व्हिच इज हैंड ड्रिवन, वी आर देयर, वी कैन डू दैट। Mhm. ऑल वी Right. वांट इज अ प्रॉपर कम्युनिटी रिकॉग्निशन, कि आप हमें कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये कम्युनिटी है और इस तरीके से डेवलप कर रही है और इस तरीके के प्रोडक्ट लाइंस हमारे हैं। बिल्कुल। बस इतना ही हमारा फंडा है। उसके अलावा एज एन ब्रांड हैप्पी कल्चर्स वो पूरी कम्युनिटी को डिक्लेयर करती है कि ये मतलब एक सील है कि हाँ जी हम लोग ये लोग हैं। Correct. True that. So I think that's very very motivating. And उसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, रादर इट्स अ रिक्वेस्ट कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमें अभी देख रहे होंगे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू ट्राई देयर हैंड्स इनटू समथिंग, बट कुछ कुछ हेजिटेशन रहती है या लिमिटेशंस रहती है, व्हाटएवर। तो कोई एक पीस ऑफ एडवाइस एज एन एंटरप्रेन्योर जो आप उनके साथ शेयर